हेलो हेलो रिपर। हेलो। हाँ तुम कौन? क्या हेलो। पता। हाँ हेलो। क्या दल्ले? कौन है रे तू दल्ले? क्या पता। आ गया भाई अपन ले। तूने बोला मैं निकाल लिया। हाँ बढ़िया बढ़िया। सब गोल्ड चाहिए अच्छे। कैसे यूज करना है यार ये फ्यूरिना को? हम्म। हम्म। फ्यूरिना को कैसे यूज करना है? पता नहीं। हम्म। पता नहीं। व्हाट डू यू मीन पता नहीं भाई? तू ही बताएगा मेरे को। हेलो। पहले मुझे खुद तो पता चल जाए। यार पढ़ो वढ़ो थोड़ा। और एंटी एलर्जिक लो क्या सर्दी में? क्या छोड़ बोला छोड़ कर जाए। रहा है। क्या बोला जाए। कुछ मत बोलो, सीधा एंटी बायजू के एलर्जिक ले टैलेंट्स लो मेरे भाई। 188 हो गए। फरीना के 166 हैं। बताओ भाई। हद है। क्या हो गया। बायजू खेला जा रहा है भाई। पता नहीं इसका मुझे एक सर्कुलेट अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ थोड़ा। फरीना मिल का। जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोकोमी तो आएगी। नहीं नहीं फरीना की बात कर रहा हूँ मैं। अभी क्या है भाई अब मेरा। मेरे को नहीं मिला तो मैं क्या बोलूं? अभी मेरे को 61 मेरा क्रिटेड हो जाएगा और 240 कुछ 250 क्रिट डैमेज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरे पास सर्कुलेट जो क्रिट डैमेज का है ना, उसमें क्रिट रेट नहीं है बिल्कुल भी। मेरा क्रिट डैमेज अभी 273 है। सही है। क्रिट रेट है 25%। क्या। 25%। ये कैसे भाई, क्रिट रेट थोड़ा बढ़ाओ और 60 तो करो कम से कम। अभी लेवल बढ़ेगी ना। फिर अभी 40 है। तो 40 है तो कितना ही तुमको 20 ही तो मिलेगा। अब मुझे क्या पता भाई, ये तो तेरा काम है। 20 ही मिलेगा 20। अब तुमने उसमें भी तो क्रिट क्या बोलते हैं, उसमें अपने पास सर्कुलेट में सिर्फ क्रिट डैमेज है ना, उसमें क्रिट रेट नहीं है ना। मुझे नहीं पता। हम्म। मुझे नहीं पता कैसे बोल देता है भाई दल्ला। नहीं पता है। नहीं पता। मुझे को है ये। नहीं पता। यार कॉन्क्वेस्ट करना है, पता नहीं क्या इधर उधर कर रहा हूँ। ये खोलना है यार एक। अब तो खोल लेता हूँ मैं। हो सकता है खुल जाए। है कि नहीं रिपर। क्या भाई? ये खोलना है, क्या बोलता हूँ। टेलीपोर्ट सोच रहा हूँ खोल लेता हूँ सारे के सारे। हम्म। फिर खो करता हूँ आर्कॉन। एकदम सही सोच रहा। मैं भी यही सोच रहा था। और सही है। फुरीना का ई लेके चले। करता क्या है भाई, ये तो सब बताओ। क्या चीज़। लेके चले ई। फुरीना का ई डैमेज देता है, और तुम अगर दूसरा 4 शॉट करोगे तो फिर वो करेगा वो। क्या क्या बोलते करेगा? हैं हील। हील। नहीं तो चल बस ई मार के 4 शॉट कर दूं ऐसा। तुम लोग जब भी तुम 4 शॉट करोगे तो वो चेंज करेगा। मैं तुम्हारे जैसे हम्म। ई अगर तुम्हारा एक्टिव है, तो जैसे तुम 4 शॉट करोगे तो वो तुम्हारा क्या कहते हैं उसमें से स्विच कर देगा डैमेज और हीलिंग में से। सिर्फ फ्यूरिना कोई तो हील कर रहा है। नहीं सब नहीं, वो जो एक्टिव कैरेक्टर होगा। भाई हीलिंग तो बड़ी कम है लेकिन। तो अभी लेवल अप कहाँ है उसके टैलेंट्स। ओ यस यस, सही बोले। सही बोले। फुरीना भी लेवल अप नहीं है, उसके टैलेंट्स भी लेवल अप नहीं है, उसकी एचपी भी ज़्यादा कहाँ होगी अभी। सही बोल भी, सही बोल भी। की बोलबो। सही बोलबो। हम्म। दोस्त जब ऐसे हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत।
हम्म, हम्म। आ रहा हूँ अभिषेक, मैं तेरे वर्ल्ड में फूल चुराने। मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया सब। अरे मैं फिर भी चुरा लूंगा। ये एक जगह है जहाँ पे खूब सारा पानी गिर रहा है। अच्छा, वो तो तेरे लिए भी नई होगी क्या? वो नई जगह है। वहाँ पे फूल है काफ़ी, कलेक्ट कर लेना जाके अगर नहीं किया तो। ले लिया मैंने। धक्का मार रहा था पानी बहुत तेज। लेकिन तब भी जो है उसके पास जाना पड़ेगा। इसके पास तो नहीं खड़े रहना पड़ता ना, फिरना के ई के। पास खड़े रहना पड़ेगा तभी तो हील करेगा वो। अरे यार, मुझे लगा चीची जैसा है। नहीं नहीं, पास खड़े रहना पड़ेगा तो गड़बड़ हो गया। तभी हीलिंगर करेगा वो, वरना हीलिंगर नहीं करेगा वो। अब तो सब आ गया जो मेन एम था। अब क्या फायदा फाउंटेन एक्सप्लोर करके हैं? क्या पता। Bow your head. अभी मेरा 2,500 हील कर रहा है। मेरा 1700। फिर टैलेंट बढ़ा है क्या तूने? हाँ 6-6 है ना। A bitter pill to swallow. मेरे तो अभी 1-1 होंगे, 1 या 0। हम्म, क्रॉसरोड्स पे एक किधर हो? हील है। के अंदर है एक हाइड्रोक्यूलस। भाई ये बड़े इरिटेटिंग है भाई। क्या हो गया? अरे ये साले क्या है वो, जो भी रहते हैं ये मॉन्स्टर जबरदस्ती एग्रो हो रहे हैं इतना। खुद को बड़ा हीरो समझ रहा दल्ला। अरे यार इधर सेट कर रहे हैं। देखिए बता इसका मैकेनिज्म क्या है। अरे नहीं मिला, भैंस ने क्या मजाक बना के रखा है भाई। क्या प्रॉब्लम लेके रखी है। भाई करना क्या है इसको, गेंद को फेंकना कहाँ है? पता नहीं। अरे नहीं, अरे यार कैंसिल भी नहीं कर सकते यार बीच में, क्या दुख है।
मिल गया चेस्ट। गू खा ले गेम, गू खा ले। तुझे क्या लगा तू ऐसा मैकेनिज्म लाएगा तो मैं चेस्ट नहीं ले पाऊंगा? खा ले। ये क्या है यार? इसमें पजल अलग से मांगते हैं यार। हाँ भाई, हो गया हो गया। The show begins. ये तीनों को एक साथ काटना होता है ना? किन तीनों को? ये जो पानी में गेंद वेंद टाइप कट के होते हैं। गेंद वेंद? मतलब गेंद नहीं, पानी में क्या बोलते हैं, ब्रांचेस से कोई चीज शेल में अगर अटकी हुई है। हाँ नहीं, हाँ वो कुछ कुछ जगह मतलब कि एक साथ करना होता है, कुछ कुछ जगह अलग अलग करके भी हो जाता है। जहाँ पे देखो तुम्हें पता चल जाएगा, जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा ना वहाँ पे वो एक एक करके ही दिखा कराएगा। पता नहीं क्या चल रहा है इसमें। May I present? क्या है भाई, समझ नहीं आया मेरे को। चलो छोड़ो, मैं जो मेरे को ढूंढना था। The show begins. इतना ऑड लगता है देखने में भाई, पानी पे चल रही है। क्यों, कोको में भी तो चलती है। अल्टीमेट में चलती है ना सर। तो क्या ये तो हुआ, मतलब चलती तो है। ये तो कोई इसका 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 तो कोई वही नहीं है, कूलडाउन ही नहीं है चलने का। कूलडाउन कैसे नहीं है? अरे क्योंकि वो जब तक उसका ई एक्टिव रहेगा तब तब तक वो चल सकती है, और ई की ड्यूरेशन ज़्यादा है और उसका कूलडाउन कम है। नहीं तो अपन लेकिन चलते चलते क्या ई मार सकते हाँ हैं? हाँ, मार सकते हैं। पानी के ऊपर ही? हाँ पानी के ऊपर भी, वो पानी के ऊपर वो नॉर्मल क्या कहते हैं लैंड की तरह काम करता है, बस तुम कैरेक्टर स्विच नहीं कर सकते। अगर कैरेक्टर को स्विच किया तो वो पानी में मतलब कि तैरने लग जाएगा। और ये सिर्फ इसमें कि हर जगह हर मतलब जगह फीना का? हर जगह हर जगह। मैंने आज ही ट्राई किया था। कहाँ किया तुमने? हाँ मैंने लीवे या मॉन्स्टाइट में कहीं किया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर मतलब दोनों में से किसी किसी जगह भी काम कर रहा है तो मतलब हर जगह काम ही करेगा। ये तो है, एक जगह का काम कर रहा तो हर जगह काम करेगा। ये बात तो तुमने एकदम सही बोली। अरे यार ऊपर क्यों चढ़ रहा हूँ, पानी के नीचे है वो। देख लेते हैं। यार ये मैं हाइड्रोक्लस कैसे लूँ यार? भाई 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 भाई, इनकी भैंस की पूंछ। क्या हो गया? May I present?
अरे हाँ भाई, इतनी देर उससे हील करेगी, हील हो गया। How brilliant! कुछ लेकिन नहीं। हील मेरे ख्याल से उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना कोकोमी का आता है। नहीं उतना ना आए, एटलीस्ट 3-4 हजार तो हील कर दे। मैं ये नहीं बोल रहा कि नीलो जोंगली इनको हील कर पाए, एटलीस्ट गानियो नाइदा टाइप के लोगों को तो हील कर सके। नहीं नहीं, वो हील तो कर सकती है उसका, क्योंकि देखो कोई डाउन टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो वो पूरे टाइम वो पर हील एक्टिव रहेगा। हाँ, पर वेट करना पड़ता ना भाई हम्म। उतनी देर। लेकिन कौन जरूरी नहीं खड़े है, हो क्योंकि रहा अभी है? तुम उसको अपग्रेड करोगे ना, तो जितनी ज्यादा एचपी होगी वो उतना ही कम इंटरवल में क्या कहते हैं हील करेगी। हम देखते हैं। उसका एक टैलेंट है। एक्चुअल में दिक्कत इंटरवल की भी नहीं, कितने इंटरवल में कर रही है, बट इंटरवल में हील की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, बस ये है फिलहाल, जो कि नहीं है। ठीक है। जीनोक्रोमैटिक अब तो केकड़े वेकड़ों से भी मिल रहे हैं। हाँ, वो पहले से भी मिलता था। तो तुम ही तो बोलते थे इतना कठिन है फार्म करना। नहीं, अरे वो देते नहीं है ज्यादा, प्रॉब्लम वो है। केकड़ा 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 केकड़ा। हाँ चलो, C6 हित्तों के लिए सेव किया जाए। चलो, मेरे वर्ल्ड के तो मैंने सारे निकाल लिए। सही है। एक बंदा अभी सोमा बैठा था, तो सोमा से बोलता है कि चलो मेरिट फार्म करते हैं, हम्म। आर्चर वर्सेस आर्चर। तो चोमा ने बोल दिया कि एक काम करते हैं, मेज वर्सेस आर्चर कर लेते हैं। तो बोलता है यू विल रिग्रेट इट। हम्म। बस चोमा ने मेरी आईडी स्विच करी, ले गया मेज, सही है, और क्या। भर दिया दल्ले में, क्या मर गया। तो उसकी भी क्या गलती है अब, उसको क्या पता किसकी आईडी आ रही खेलने के लिए। ये क्या डिडल पिडल, कैट एंड पिडल। वो खा लो भाई, वो खा लो। पहले टीपी सारे अनलॉक कर लिए जाए हैं, क्या बोलते हो अभिषेक? और टीपी अनलॉक करने के लिए टीम बदली जाए, ट्रैवलिंग टीम चाहिए। फीरिना को घर बिठा दूं क्या? घर ही उठा लेता हूँ। ये लान सायु वॉन्डर भी सही है। Mind the side effect.
सारे के सारे टीपी खुल गए। क्या फॉरेक्स है? टीपी अब और कॉन्क्वेस्ट करने जा रहा हूँ मैं तो चालू A कर bit दिया था about a आर्कॉन swallow. मैं। May I present? मैंने आर्कॉन क्वेस्ट चालू कर दिया था। फिर फिर वो क्वेस्ट लोकेशन इतनी क्वेस्ट में फंसी हुई है। मैं ऑलरेडी 3 क्वेस्ट खत्म कर चुका हूँ सिर्फ उस क्वेस्ट लोकेशन को निकालने के लिए। मैं भी बट वो वही अभी कर रहा भी हूँ। वो पहले मरमोनियन है ना, जो भी इसका नाम है। वो कैमरा वाला क्या? कैमरे वाले नहीं, जहाँ पे क्या न्यूलियट बैठता है। वहाँ पे क्वेस्ट है कैमरा वाला। हम्म वही कर रहा हम्म है क्या? हम्म KAMERA वाला कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक हो गया हाँ हाँ, डेमो वही का। वही। वही वही जोमो क्वेस्ट तो मैं कर रहा हूँ भाई। मैं 1 मिनट में हारमोनिया पहले हारमोनिया।
है इसकी पूंछ। अरे यार ये एक अभिषेक, हाँ ये लेबोरेटरी रूम्स में एक टीपी ऊपर है, तो क्या उसके लिए हाँ। मुझे स्टोरी करनी पड़ेगी? पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद नहीं करनी पड़ेगी, मैं पक्का कह नहीं सकता। मैं नहीं तो बिना स्टोरी किए मैं वहां तक पहुंचू कैसे भाई? पता नहीं। लगता फ्यूरिना तो 90 तो नहीं हो पा रही भाई। फ्यूरिना बॉस मटेरियल ही नहीं मिलेगा, 90 कैसे हो जाएगी फ्यूरिना? होता क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ बॉस मटेरियल नहीं मिलेगा तो फ्यूरिना 90 कैसे होगी? बॉस मटेरियल नहीं मिलेगा मतलब उसके लिए फ्रेजाइल कितने ही खर्च कर लोगे? अच्छा वो उसकी तुम बात कर रहे हो क्या, वो वीकली बॉस वाले? वीकली बॉस नहीं, तो क्या, यही यूजुअल बॉस। तो यूजुअल बॉस है तो मिल ही जाएगा ना। नहीं लेकिन फ्रेजाइल खर्च करना पड़ेगा ना, हाँ यही तो बोल रहा हूँ। वैसे भी अभी फूलों की कमी है, तो जब फूल जब इनफ होंगे तभी उसको करने का फायदा है, वरना कोई मतलब ही नहीं है। फूल 60 तो हो गई, 70 के लिए 7 फूल चाहिए। हाँ 7 फूल तो क्या है, मैं जाके अभी किसी के वर्ल्ड से चुरा लेता हूँ। मेरे को 12 चाहिए, मेरी 70 हो गई है, 80 के लिए 12 चाहिए। एक सेकेंड, अब वो हो गया होगा ना फाइनली भाई। वो हटा वो भाई, वो अब जाके आगे का कर सकते हैं। पहले मरमोनिया The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neurvalet did say you'd be welcome at any time. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. Neuvillette! Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you have managed to complete all the release paperwork. That's right. And we came here to see you right away. A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But हेलो how? अभिषेक। Is he okay? हाँ हेलो हेलो, हाँ चली गई यार मेरी। Most people wouldn't be capable of entering मिलना in the कुछ, हेलो। first place. हाँ हाँ बोलो। I'm not completely sure तुम्हें how I आवाज could have कम क्यों आ gotten रही there एकदम से? myself. पता नहीं। Yes? What is it? Oh, right. Paimon felt it too. We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter.
In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. अरे The यार source ये of the साला tremor was here on the चैट नहीं surface near करने देता Poisson. यार ये After the shaking iPad का stopped, the क्या water बोलते हैं levels in the मैक Poisson में जो area ऐप है वो। rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appeared. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her. I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. There's no time to lose. Let's get going. Please be careful. बच्चों Poisson. Poisson में कैसे जाएं रिपर? Poisson में कैसे जाएं? कहाँ पे Poisson. ये कहाँ है कोसों Poisson नहीं Poisson. कोसों कहाँ है बताओ ना पता नहीं अंडर वाटर दिखा रहा है. अंडर वाटर में यहाँ पे जाने का रास्ता किधर से है? तुमको खुद को नहीं पता कि कहाँ है कोसों तो मैं तभी तो कैसे मैं बता पूछ रहा दूँ कि हूँ. वही तो मैं बोल रहा हूँ तुम जो पूछ रहे हो वो तो ठीक है पूछ वही मैं रहा बोल रहा हूँ हूँ मैं. यार ओके नाविया वाला है क्या? अच्छा यही है. ओके Poisson. इसका टेलीपोर्ट था एक. Oh no! What happened here? Navia should be around here, right? We need to make sure she's still... Paimon means we need to check on her. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's someone on the roof over... Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right, just hurry. I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree! Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia, are you okay? नाम क्या है भाई फीरिना के मटेरियल का मेरे को याद नहीं है. देखो ना लिली जल्दी बताओ लिली देखते हैं। करके कुछ नाम है उसका.
लेक ले लिए क्या कुछ? हाँ कुछ लेक लिली करके नाम है। You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water... Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run... He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... Disappoint कर रहे हैं सब मुझे. He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know... Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. You'll be in charge. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Ah, right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all dissolved. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad... Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Demoiselle! We've got a situation here! I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And out she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render... Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? Thank you.
You took your time. Sorry. I bumped into the traveler and Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. check तेरी second ID दे दे. तेरी second ID में लिख ले निकालता हूँ. ठीक है ले लो. Thank you. It's good to have you helping. So But what's the चल के जाना पड़ेगा situation? ना मेरे को. Have you seen Gemma? इसमें कुछ भी अनलॉक नहीं है. Nope. I've been here a while, and she still hasn't shown up. उसमें मतलब फाउंटेन का भी कुछ भी अनलॉक नहीं है. How bizarre. भगवान Maybe की it was bad statue तो कर intel. लेता भाई. Well, we won't get anywhere by कुछ नहीं किया standing उसने. around waiting. Traveler, Paimon, let's go ask around. Excuse me, good sir. Gemma? You mean Caesar's fiance? Sure I do. I'm just trying to get a hold of her because I need her help with something. I heard she comes here a lot. Yeah, she does. Poor thing. It's no secret why either. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Often she just sits there in front of his head. I asked her what she was doing once. She said she wanted to speak to him again. She knows he's gone and can't hear her from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiancé all about it. And she's been doing this ever since Caesar passed away? I'll bet. Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits his grave. Gemma's the only one who still thinks about him after all these years. I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it does, I'm sure Caesar must be grateful to have someone who remembers him fondly. पता नहीं, मुझे नहीं पता. किसी शॉप में तो होना चाहिए. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Anyway, all of that said, she's running later than usual today. Normally, she'd be sitting in front of his grave by now. I wonder if she's okay. Well, that's everything I know, I'm afraid. You might have more luck asking some other people. All right, well, thanks for sharing all of this with us. We'll keep asking around. You're welcome. I just hope she'll be able to move on one day. Did you hear the news? They're saying the Phantom Weasel's back. You're kidding. Wait, isn't he dead? I don't know anymore. All sorts of news flying around nowadays. I can never tell what's true and what isn't. But what if, just hypothetically, I mean, what if this weasel's the real deal and Caesar was framed? Called it. Seriously, 10 years ago, on the day it all went down, I said to myself, you know what? This guy's been set up. The Caesar I knew was a good guy. He gave balloons to children on the street, for Pete's sake. What, are we supposed to believe that he was a balloon thief or something? Give me a break. Oh, please. Weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, that gosh darn lousy son of a, you think you know a guy, or words to that effect. Wait, did I say that? I don't seem to recall. Hello there. Sorry for disturbing you, but I couldn't help but notice you were discussing the Phantom Weasel. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom of it. Do you think you could spare a moment to tell us a little bit about Caesar? You've come to the right people. Yep, I was there. Back when Caesar used to perform magic tricks on the street. He was a great magician. The best trick I ever saw him do was pop a transparent balloon, only for a whole bunch of doves to fly out from the inside. I was right up close and didn't blink or look away once. But for the life of me, I still don't have the faintest clue how he pulled it off. Really incredible stuff. I saw him perform too. He always used to bring some gifts along for the kids who came to watch his show, and he'd hand them out after he was done. Sometimes, he even got the kids to write their wishes down, and then he'd make the items on the wish list appear in his next show. Huh. He doesn't sound like such a bad guy. But after he died, there were also rumors that he used the wish list to find out what was precious to people, with the intent to steal it later. As I'm sure you know, the Phantom Weasel would steal just about anything from anyone. Whatever the case, now that the Weasel is back, Caesar's become a hot topic once more. I bet Gemma must be pleased. If Caesar's name gets cleared, maybe it'll finally give her some solace after all this time. No, speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? Wait, it
looks like she's injured. Come on, let's see if she's okay. Hi there. You're Gemma, right? Who's asking? Don't be afraid. We mean no harm. It looks like you're injured. How bad is it? Thanks for your concern. But you didn't answer my question. Who are you? And what do you want with... My name is Linny, and this is my sister Lynette. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. So if you're willing, we'd love to hear what you think about all this. अर्जुन तो शाम को आएगा कॉलेज से. Promise you can trust us. We won't hurt you. In fact, we'll do all we can to अर्जुन keep you हाँ safe. करेगा. I never believed that he was the Weasel. Huh. 60 पीटी पे है. Guaranteed है. 40-45 पोल है उस पे. 10 years. Do you remember anything strange in the weeks leading up to the accident? Did Caesar have a falling out with anyone, for instance? No, not that I know of. Got it. हो गया तुम्हारा एसेंट तुम लोग का. Sorry for disturbing you. If you don't have any more questions, please leave. I want to be alone with him. ले रहा हूँ उसका वर्ल्ड से. अपने पूरे कलेक्ट कर लिए? हाँ अपने ले लिए सारे. Judging by the look on her face, there's definitely something fishy about अरे वॉपर फ्लार कर रहे हैं भाई. वॉपर फ्लार नहीं है. That's fair. ये तो हम लोगों ने We're कल ही just a कर bunch लिया of था. strangers who showed up. वॉपर फ्लार मेरे को पता नहीं थी और मैं कर लेता हूँ. It makes sense that she'd be wary around us. In any case, I doubt we'll get any further here, so let's call it a day. टैलेंट मटेरियल भी Meet कर me लिए थे outside कल ही Hotel इसके. de Boer tomorrow, तो हम and लोगों then के we'll start पास the next ऑलमोस्ट step of सब our फुल है. plan. क्लाइंट नहीं है मेरे पे. पर उतना है जितना नीडेड है. बॉस खोला क्या किसी का? वेल. वीकली बॉस नहीं अभी नहीं. मेरे को स्टोरी करनी भाई. स्टोरी मैंने चालू नहीं करी. मैं सोच रहा हूँ अभी कर लूँ. बिना वीकली बॉस खोले भी उसको मार सकते हो. बट यार फिर वही बात है ना. क्या बात है? कर ले क्या? कर लो. उसमें ऐसा क्या है कि तुम्हारा भाई खत्म हो जाएगा सब कुछ. अरे यार वो फिर वो नहीं रहेगी. क्या कहते हैं हाइप. हाइप खत्म हो जाएगी बिल्कुल. पता हाइप वैसे बाद में खत्म हो भी जाती है बट इसी वर्ल्ड में लेक लाइट ले फार्म करना. बेचारा. मैं ऑलरेडी निकाल रहा हूँ. निकालो फटाफट. मेरे को लेकिन चाहिए यार. थोड़ी लेक लाइट और चाहिए मेरे को. Sorry. अगर कोई बकरा मिल जाए तो बताओ यहाँ पे. लास्ट असेंशन बचा है मेरा. They won't ever come back here again. What? लेकिन बॉस फार्म नहीं किया है फिर मैं. वो वाला असेंशन. Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but 30 फ्लावर चाहिए मेरे को. 30. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, Demoiselle?
Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? हेलो Everyone ends up here sooner or later. मैं कह रहा हूँ वॉपर फ्लावर कितने हैं ऐसे वर्ल्ड में? मेरे वर्ल्ड में यार कल मारे थे। But when I do, I hope you'll let me be मतलब वैसे होते कितने हैं इन जनरल? काम हो जाएगा क्या मेरा? बहुत सारे हाँ आराम से हो जाएगा। देखो मॉन्स्टार्ड में भी हैं, लीवे में भी हैं, ठीक है, इनाजुमा में भी हैं और सुमेरु में भी हैं। After all, besides you, demoiselle, the two of us. पर वो बुक शो नहीं करेगी ना जल्दी जल्दी। हाँ इंटरैक्टिव से चले जाओ, तो बोल रहा हूँ। I believe we नहीं करना पड़ेगा। just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your request. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I'd always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me. मैं लास्ट असेंशन पे हूँ लेकिन टैलेंट के लिए भी चाहिए ना इसे। फूल थोड़े ना चाहिए टैलेंट के लिए। फूल? You can चाहिए spend क्या as फूल? much time नहीं as नहीं you नहीं need here, Navia. We'll stay with you. फूल नहीं चाहिए। Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obana, Khan, Burnett, Giverny, Francine, so everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But the overall outcome indicates that the cost... Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider. Malus and Silver were not the price for saving anyone. क्या डैमेज निकल रहा है तुम लोग? Thank you, Paimon. What you said क्या just डैमेज now निकल was रहा है? pretty amazing, actually. I'll remember your word. Oh! डैमेज। Really? Seems you've become कैसा आ रहा है? eloquent in the time अभी since नहीं we देखा last भाई, met. टेस्ट नहीं किया। बिल्डी करे जा रहे हो? से बढ़ा रहा हूँ, अभी तो कैरेक्टर यूज नहीं कर रहा उसको। Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? काजुआ वाजुआ यूज करके 20-25 हजार आ रहा है। Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such,
Do not be troubled by this token of our हैं? sincerity. Perhaps हुआ? one तुम कैसे day पढ़ सकती you'll हो भाई? also be able to help me in the same किसकी way. किताबें तुम पढ़ गई? There would have been many more जस्टिस casualties. की किताबें तुम कैसे पढ़ I गई? won't forget your गिनी kindness. थी पूरी? Furthermore, I sincerely regret काश मैंने फार्म करी होती है सब पे। I only wish that my मैं people तो वो knew देखता भी नहीं हूँ यार। earlier to prevent क्या this कहते हैं from उसे? happening. Don't say that. You and Free your farm guide. siblings did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. बॉस And they मारना weren't है। the आ रहे हो क्या price मारना paid बॉस? for other salvation. आ जाऊंगा। They आजा। chose. कौन सा वाला? I've never liked hearing Weekly? people put it that way. Furina का It's नहीं like नहीं मेन trying बॉस। to relieve pain by आ saying जाऊंगा। some noble-sounding words. You're right. I'm sorry for your loss. आता है इसलिए। Water is life to Fontaine's people, and it also spells मैं ऊपर disaster. फ्लावर निकाल रहा हूँ। It's no wonder that people always say that prophecies represent. So, you're one who will try to change. Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have कमी some नहीं है things to ऊपर फ्लावर take के। care of, and the. By the way, traveler, Paimon, one more thing. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use Holy when necessary. shit. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that कहाँ we गया? said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Previously, it was the fortress of Maripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent. My people initially came to prepare for ruin exploration. यार ये फूल अपन कहीं से खरीद नहीं सकते? This does. So, that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected. Linny told me that outside of the house, Physical damage they bonus. trust most, Nice. which is why I want to give you this task. एक crit damage पे stack हो जाए 41 crit damage आ जाए। Members see each other as family, but Linny, Lynette, and मजा Fremine said आएगा। that they also see you as such. Even though you are not from the house, I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. के ऊपर एक Since the सेलर है children वो consider बेचता you है। family, it's only natural that I ले freely shared with you. खरीद लेता से All जाके we और gotta क्या? do is go to some ruins, right? लोच हो रही है। But may I देख tag मैं along? गया हूँ You वहाँ पे। wish to join, Oh. Miss Navia? But are you sure you're up to exploring? पर वो some क्वेस्ट करके नहीं आया क्या? You need to rest. पता नहीं सेलर sad, ढूंढ yes, रहा हूँ। but मुझे नहीं लगता I उसका can't कुछ just go क्वेस्ट से फर्क back पड़ना and चाहिए। plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. खड़ा तो नहीं दिख रहा भाई यहाँ पे। पे क्या चीज है? तुक्की नहीं मार रहा इसमें तो यार ये। यहाँ अंदर ही मिलेगा पर नहीं है यहाँ कोई। वो क्वेस्ट खत्म करने के बाद ही मिलेगा पक्का।
फिर और क्या कर सकते हैं। एक बार बॉस और मारेंगे। $15 खरीद सकते हैं। बहुत है 15 दिन। बट उसके लिए टिगल्डा लगेगा। वो एक मछली नहीं मिलती है? अरे वो तो बहुत पड़ी है, 500 होगी मेरे पे। हाँ तो वो 2 टिगल्डा का एक और लगता है। ले मगर तूने क्वेस्ट बट कर तब रखा तक है तो हो जाएगा, तब तक तो सारा काम हो जाएगा भाई। भाई तो अगर क्वेस्ट करनी पड़े तब तक तो हाँ हो जाएगी। So, are these the ruins the बिना Knave was क्वेस्ट करे talking अगर about? दे रहा होता तो अभी खरीदते अपन। चलो कोई बात नहीं। Oh, They seem to be pretty ancient. 2-4 लोगों को और लूटना पड़ेगा और कुछ नहीं। Just be careful. 30 चाहिए तो एक ही बार में हो जाएगा मेरा तो। शहीद हो जाए तो क्या है भाई, 1-2 लोगों की बलि चढ़ानी भी पड़े। चलेगा जा। चोमा ने तुम्हारे वर्ल्ड से चुरा जरूर लिया पर उसके पास फ्यूरिना ही नहीं है। करा कहीं का कमाल है भाई। मेरे को लगा उसको फुरीना मिली है। कार्टून है। इतनी देर में तो मेरा हो जाता फार्म, मतलब मेरा तो कम से कम सेंड हो जाता। ये कौन आ रहा है भाई? ताइरित्सु क्या करेगा आके भग मता। चल भाई मैं दूसरों के घरों में डकैती डालने जा रहा हूँ। अरे वो बॉस कर लेते हैं एक और बार। हाँ देखो पहले। बिल्कुल देखो। हाइड्रो ट्यूल पाई यही है ना? हाँ हो गया भाई, फोन आ जाओ। डोंट रश। A bitter pill to swallow. क्या हो गए? अभी 14 और चाहिए भाई। बड़ी आफत है। चलो लूट लो जाके। सोमा का अकाउंट खुलवाओ किसी से भाई। सोमा का अकाउंट खुलवाओ, उस पर लुटाई करी जाए जरा। हो पाएगा तो ही है। This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it too. A इससे Fontanian would most likely लिनी dissolve और the वॉन्डर moment they लेकर के fell. जाता हूँ। You can't go down if there's primordial seawater. It's too लिनी dangerous के and it won't be लोकल any help. स्पेशलिटीज बता देगा। हाँ Don't get by my wrong. We're not saying ज़्यादा मशक्कत नहीं you're करनी right. पड़ी। पता नहीं भाई, मेरा क्या दिमाग खराब था, मैंने लेनी नहीं लिया। अच्छा है, यूजलेस है भाई वो। अरे डैमेज कितना प्यारा डैमेज है उसका। यूजलेस। Complicates things. In that case, लोकेशन भी बताता है चीजों की। The water levels here are unstable, and there's a chance I'll go together with you. इतना भी यूजर। Perhaps you'll find the exit just up ahead. all right. Come with us for now then. जी जी।
Oh no, it's a dead end! Let's try climbing over from the side. 58 छोटी एयर वाले नहीं मिल रहे भाई, सब बड़ी बड़ी एयर वाले मिल रहे हैं दल्ले। बड़ी एयर वाले तो कुत्ते होते हैं भाई, हम जैसे ही होते हैं। पर इनवाइट करते हैं, मैं गया, बोलता है हाँ कर लो फार्म, बोलता है हाँ। वो दूसरे बंदे ने छोड़ा। मैंने बोला दल्ले पहले बता था। कर लो भाई जो करना है, क्या कोई ले गया अब मैं क्या करूं। R2 ले लो। लेक लाइट है ना? हाँ लेक लाइट ले ली। अरे फटाफट फार्म हो जाती है वैसे तो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्लस्टर में मिल जाती है। भाई भाई Wait, there's something wrong with this bridge. Ok. Demoiselle? Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't... Maybe she just wants some time to herself, Mom. Hmm? Oh, was I? Yes, it would appear. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out. Oh, right. I nearly forgot. आर्कन सब ठीक है। When I dozed off. ये साला जोंगली हर बार धोखा दे। Is something the matter, Demoiselle? 4 बैनर से नहीं मिला है मेरे को, I बताओ। was just trying to recall why we came out from. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our मजाक help सा हो before रहा है। with foreign merchants who had a debt. बाकी सारे आर्कन 50-50 पे जीता हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। We were headed to see how एक वेंटी छोड़ के बाकी सारे आर्कन में जीता हूँ 50-50 पे। Right. Yes. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver too. Furina, Raiden, मैं जोंगली छोड़ के बाकी सब 50-50 जीता हूँ। मतलब जोंगली में भी मेरा क्या कहते हैं डीलुक निकला था, फिर उसके 8 विशेष में मेरा वो निकल गया था जोंगली। मेरा ये सिर्फ रेडन C2 जब कर रहा था तब हुआ है, वरना तो मेरे को 50-50 अर्ली सब मिला है। Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that purpose. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor opened. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett. Oh, yes. One more, Miss Navia. These are some flower seeds that कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडी। Please take them. They're very good. I don't know what we would have done without your help. So this is a little token of our appreciation. पूछो भाई इसको, राजा को पूछो भाई क्या हेल्प चाहिए। Much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some empty flower pots at home. Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative है जो ये तो गिर के मर गया खेली चल। Very well. टूट दिया। Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett. That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before.
Sometime recently, And why are there so few people around here? Where did everyone go? We must mind the time, demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? Oh. Look, it's Navia! She's here! And her two attendants are with her! Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly... Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And why do I have no... And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind... Typically, it wouldn't be allowed. Hey, what kind of place do they think this is? Come on, do they have any idea what they're doing? Seriously? Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula,